Hello students, today we start our new chapter, chapter 2, polynomials. Before we start the polynomials, first we discuss about the algebraic expression we read in 6th, 7th and 8th class. A combination of constant and variable connected by the four fundamental arithmetic operation plus, minus, multiply and divide is called an algebraic expression. Constant और वेरिएबल का कनेक्शन किसके साथ? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल 6x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 2xy. वन मोर एग्जांपल 6x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन y प्लस 3x. दीज आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. combination of constant means numerical number and variables means x, y, z, a, b, c connect by the mathematical operations. Now next, polynomial, an algebraic expression in which variable have only non-negative integral power is called a polynomial. Students, एक चीज क्लियर ध्यान रखें, all expressions algebraic expressions are not a polynomial. polynomial कौन से algebraic expression होंगे? जिनमें वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव एंड इंटीग्रल मीन्स पॉजिटिव एंड कंप्लीट नंबर. फॉर एग्जांपल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5. पावर ऑफ वेरिएबल इज 3 इज द कंप्लीट इंटीग्रल नंबर एंड पॉजिटिव, सो इट्स अ पॉलिनोमियल. 5y स्क्वायर प्लस 3y, पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, इट्स आल्सो positive and integral means complete number, so it's also a polynomial. Example, question is which of the following are polynomial? First is x cube plus 3x square plus 2. Here degree of variable is 3, is the integral means complete number and positive, so it's a polynomial. In second example, root x5 plus 4x plus 2. And root x5, it's mean when we remove the root, power is 1 upon 2. Power of root is 1 upon 2. Plus 4x plus 2 means x power 5 upon 2. Here degree of variable x is 5 upon 2. It's not the integral. Integral means complete number होना चाहिए 1 2 3 4 5. तो डिग्री पॉजिटिव है बट नॉट द इंटीग्रल, सो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज डिग्री फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है. नेक्स्ट थर्ड, 1 अपॉन एक्स प्लस 5. इन दिस एग्जाम्पल एक्स इन द डिनोमिनेटर, व्हेन वी x को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? -1, रेसिप्रोकल हो जाएगा प्लस 5. हियर डिग्री इज -1, इट्स द नेगेटिव टर्म. अकॉर्डिंग डेफिनेशन डिग्री कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड इंटीग्रल. हियर डिग्री इज नेगेटिव, सो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल. फर्स्ट टर्म, the part of a polynomial separated by plus or minus sign is called a term of the polynomial. polynomial के पार्ट जो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं, these are known as the term. For example, x square minus 4x plus 7. In this polynomial, it's having 3 terms: first, second and third. ठीक है. Part which are separated by only plus and minus. For example, one more example, 3x. It's having only one term because it's a 3 into x. It's a single term. ठीक है, केवल प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं. नाउ कोफिशिएंट, कांस्टेंट एसोसिएटेड विद टर्म्स. टर्म के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इट्स नोन एज द कोफिशिएंट. फॉर दिस एग्जाम्पल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट नो नंबर इज देयर, सो इसको क्या एज्यूम करेंगे हम? 1. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 1. कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म कितनी एक्स के साथ? -4.
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -4 मीन्स कांस्टेंट क्या होता है जो टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म एसोसिएट होती है, इट्स नोन एज द कोफिशिएंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. Highest power of the variable in a polynomial is known as the degree of the polynomial. Variable की जो highest power है, it's known as the degree. For example, polynomial is 2x4 minus 6x cube plus 4x plus 1. In this example, variable is x and highest power of x is 4. So degree of the polynomial is 4. More example, 6x plus root 3. Here variable is x and highest power of x is 1. So degree of this polynomial is 1. So students, highest power of the variable is known as its degree. Yes, now classification of polynomials means types of polynomials. First, in the basis of number of terms. Terms के basis पर types of polynomial, 3 types are there. First monomial, second binomial, third trinomial. But monomial, a polynomial containing one non-zero term is known as monomial. Polynomial जिसमें एक टर्म होती है, one non-zero term. For example, 5x, 3x cube minus 7x. These all three are the monomial. Only one term are there. Second, binomial, a polynomial containing two non-zero terms. कितने term होनी चाहिए? Two non-zero terms. For example, first example 5 plus 2x, second example 7x square plus 3x, and one more example y30 plus 1. Third, trinomial, a polynomial containing three non-zero terms. कितनी term होनी चाहिए? 3 non-zero terms. Example 8 plus 3x plus 3x square. कितनी term होगी? 1, 2 and 3. Root 2 plus x minus x square. Here also 3 terms. स्टूडेंट्स वन क्लियर करें. मोनो का मतलब होता है 1, बायो 2 and ट्रायो मीन्स 3. In the basis of degree of the variable degree के according types of polynomial. First is the constant polynomial. A polynomial of degree 0, जिसकी degree 0, it's known as the constant polynomial. Means all constant number is known as the constant polynomial. -3, 7, 5. Linear polynomial, a polynomial of degree 1. This polynomial of degree 1 is known as the linear polynomial. Example 2x plus 5, 7 by -9. Third, quadratic polynomial, a polynomial of degree 2. For example, 3x square plus 5x minus 9, 5y square minus 6x plus 7, and 1. Fourth is the cubic polynomial. A polynomial of degree 3 is known as cubic polynomial. For example, 7x cube plus 5x square plus 3x plus 9. Degree is 3. And the last one is the biquadratic polynomial. A polynomial of degree 4 is known as the biquadratic polynomial. For example, 4x square minus 3x cube plus 4x square plus 3x minus 5. It's the basic concept of the polynomial. In this video, we discuss about the algebraic expression, polynomial, terms, coefficients, types of polynomial. Now, in next video, part 2, we discuss about the zeros of the polynomial, factor theorem, remainder theorem.